Okay, students, good evening to all of you. So I'm going to start today lecture. So before starting today lecture, my first question is that you all have download and install Python. No, You sir. please mute. Please mute. One first question is that you have download or install and download Python in your system. Please give reply. I have downloaded, sir, but for installing, it's some difficulties there. uh, which version you had installed python.org, from which site you have installed? Yesterday you told first one, sir, official website you told, na? Python.org. Yes, Yes. sir. Okay, so you download it and try to install, but it gives problems to you. Yes, sir. Because before that one, I used in some few days back. I used that one, sir. 32-bit one. Okay, what is your operating system configuration? Windows 10. Windows 10 64-bit or 32? 64-bit. 64, sir. Okay. 64, sir. Okay, so you have to install. Once you will start to install, I'm going to tell you one thing, one important thing. Once you will try, I'm going to explain little bit that Okay, sir. first of all you will type Python. Okay, so you will go to the official website of python.org. Here you have available download. Then you will download the latest version of Python for Windows. If you are using other Yes. operating system, then you can go in the these following links. इनमें से और कोई भी लिंक में आप कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं. तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसकी python.org है. ठीक है. इसमें Yes, जाने sir. के बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक किया हुआ. इसके बाद इसका ये आपका स्टार्ट हो गया. यहाँ पे आपके पास exe आ गई. अगर आपने इसको देखा तो ये आपको फोल्डर नज़र आएगा, और इस पर फिर आपको क्या करना है, ये स्टार्ट करना है. अब बिकॉज क्या है कि मेरे उसमें तो पाइथन पहले से इंस्टॉल है. आई हैव ऑलरेडी Yes, sir. इंस्टॉल पाइथन, सो आई कांट यूज. तो यू हैव टू यूज this dialog box. In this dialog box, if you try to install Python first time, there are two check boxes, first and second. I think you have not checked the second checkbox. That's why Python is not properly installed in your system. You noticed that time when you were trying to install Python in your system. You had noticed that. Yes, sir. It came actually. I don't know. I forgotten what it showed yesterday. Okay. It is showing modify, repair, and uninstall. Okay, because you have already installed Python before, so Okay. it can't be. It either upgrade now. Okay. Update. Okay, sir. Upgrade now. Upgrade. Upgrade. Or you want to, if you want to, if you have already Python, then why you need to install Python again? If Actually, you just use. So that was not opening, sir. That's why. okay, no, Old one also. okay. So I'm telling you first of all how you will install Python, because it is very important. After that all thing will go in easiest way. First thing, you have to install Python. This is Okay. the best thing you have to do. So I'm going to tell. So for that I have to uninstall Python from my system first of all. Okay, so that I can tell you easily. So I'm going to uninstall Python first. Any other doubts in yesterday lecture? स्टूडेंट्स जिन्होंने कल का लेक्चर ज्वाइन किया था, उनको इसके अलावा कोई डाउट है? कल के लेक्चर में जो आपने ज्वाइन किया था उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स.
because this is very basic thing that you must install Python. That's why you do your all practical things on that. और आपसे नहीं हो रहा है तो आपको मैंने कल ये बताया था, एक जुपिटर वाला बताया था, जुपिटर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप जुपिटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप जुपिटर को डायरेक्ट ही ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू टाइप जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक टाइप कर रहे हैं आपको, एंड वंस यू विल क्लिक ऑन जुपिटर नोटबुक, देन यू कैन सी jupyter.org. this is the official website, and from here you just click on try in your browser option. इसमें से आपको try in your browser option पे क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे, when you click on this try in your browser, तो आपके पास में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अप्लाई है। तो आपको फर्स्ट वाला जो ट्राई क्लासिक नोटबुक फर्स्ट वाला है, यू हैव टू सेलेक्ट द फर्स्ट ट्राई क्लासिक नोटबुक। वंस यू विल क्लिक ऑन दिस, then binder will connect. So binder will start to connect. It will take little bit time, so please be patient. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। Once binder will connect, तो I will show you that I told you yesterday also. So now I have uninstalled Python from my system. So now you can see that here, go on file and click on Python 3. Once you will click on Python 3, just start to type your Python script here. Simple print hello and go on run. Once you will click on run, then you will see the output hello. This is the easiest way. If you don't want to install or download, you have problems. If you are using mobile phone, then you can just use jupyter.org website and directly use Python from your mobile phone also. आप अपने मोबाइल से भी इसको डायरेक्टली चला सकते हैं। तो इसमें इसको यूज़ करना किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक, और आप इसको आसानी से इस पर स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। a = b, b = 20, then c = a + b, then print C. Now when you click on run, then you can see the output is 30. It is visible to all of you. सबको दिख रहा है यहाँ पे? Yes sir. So this is the way you can use jupyter.org online. Very simple way. Okay, and now I'm going to tell you how you will install Python from its official website. That is, we will go on Python, we will just type Python and we will go to the official website, that is python.org. when you click on python.org, go on download. Actually we have already download, so again I am going to download Python 3.9. this is the latest version. This is the latest, ये latest version है, और इसको आपने अपने सिस्टम पे डाउनलोड करने के बाद उस फोल्डर को ओपन करना है, और ये देखिए ये दिखाई दे रहा है, ये डायलॉग बॉक्स आपका आएगा. दिस डायलॉग बॉक्स विल अपेयर फर्स्ट टाइम व्हेन यू स्टार्ट इंस्टॉलर पाइथन 3.9.7 64 बिट. अब ये जो आपका डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, ये डायलॉग विंडो आ रही है, इसमें आप लोग मिस्टेक ये कर जाएंगे, जो नीचे वाला चेक बॉक्स है इसको क्लिक करना भूल जाएंगे आप लोग. तो जो अगर आपने इसको क्लिक नहीं किया है तो आपकी पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो पाएगी प्रॉपर. यही दिस इज़ द मेजर कॉज वाई पाइथन इज़ नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल इन योर सिस्टम. सो ऑल ऑफ यू मस्ट चेक दिस बॉक्स. ओके, वंस यू विल चेक दिस बॉक्स एंड गो ऑन इंस्टॉल नाउ. क्लियर हो गया सबको, समझ में आ गई बात? आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने से पहले देखना है जो पहला चेक बॉक्स तो क्लिक होता ही है, दूसरा चेक बॉक्स क्लिक नहीं होता है. यू हैव टू click that checkbox also. If you click this checkbox, then only Python will install in your system. ये दोनों चेक कर लेने के बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है. तो देन आपका इसको भी यस कर देना है, नो नहीं करना है, यस करना है, क्योंकि ये पूछ रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप मेक चेंजेस इन योर डिवाइस. यस पे क्लिक करना है. इसके बाद आपको 5 मिनट्स वेट करना है. पाइथन आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जा रहा है. ठीक है, पाइथन विल स्टार्ट टू इंस्टॉल इन योर सिस्टम.
Once it will complete, I will show you how you will open Python. So I think this is the way you can use jupyter.org. Now I think everyone has clear jupyter.org. Please give Yes, response, sir. all students. Yes. So very easy way to use Python is use Jupyter notebook, that is jupyter.org. Okay, this is the official website, and you can use Python here in easy way. We are waiting for little bit because it will take little bit time for setup process. Another if other doubts of yesterday lectures notes that we have discussed, how to download and install Python, this is the first topic that we had covered. I am going to revise it all again. And next is Python character set, tokens, identifier. These all things are clear to every student. हर एक स्टूडेंट को पता लग गया है कि टोकन का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं. एवरीवन क्लियर? ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, डिलीमीटर का मतलब क्या होता है, कमेंट्स का मतलब क्या होता है. एवरीवन हैव्स क्लियर? प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स. Yes, sir. So now you can see that when setup was successful. Now finally answer is setup was successful. Then please close this and go on your search bar. Here you just type Python. So you can see that Python 3.9.6 is installed in your system. You just click on it, then you will see this command cell window. I am going to increase the font size so that so now you can see this is the Python is used in two mode. I already told in yesterday lecture that Python can be used in two mode. That is, first mode is interactive mode. First one is interactive mode, and second one is script mode. Okay, so I am using now interactive mode. This is called interactive mode, that is command based. Interactive mode क्या होता है? कमांड बेस होता है. आप यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, आप सिंपल यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट और हेलो लिखा मैसेज. प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए पाइथन में. तो प्रिंट एंड डबल क्वैट के अंदर आपने हेलो लिखा, देन इट विल जनरेट हेलो आउटपुट. सो दिस इज interactive mode, and second one is, that is, first one is interactive mode, that is command based, and script mode use GUI, that is graphical user interface, like IDE. IDE means integrated development environment. Okay, so this is the way this is the first way you are using interactive mode. And second one is, that is GUI format. I am closing this. Again type IDLE, that is IDLE Python. These, once you install Python from official website python.org, you will have available Python in two mode. That is, first is interactive mode,
पहला कौन सा मोड है, इंटरेक्टिव मोड है. दूसरा है IDLE पाइथन. वंस यू विल क्लिक ऑन दिस IDLE, then you will see the GUI वर्जन दैट इज स्क्रिप्ट मोड ऑफ पाइथन. ये दिख रहा है आपको यहाँ पे पाइथन 3.9.6. ये GUI क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइल, एडिट, सेल, ये मेन्यू आपका दिखाई दे रहा है. आप ये GUI फॉर्मेट है आपका ग्राफिकल, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड IDE, that is integrated development environment. You just need to go on file, then please click on new file and start to type your new Python code. Here you can also type print. This is GUI because it show the syntax also. In command form this will not show because that is not GUI. This is GUI. Here it is showing the syntax of print commands, also print statement, that once you will type hello and go on run menu and click on run. You can type F5 from keyboard also. कीबोर्ड से आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं. और जब इसको आप रन करेंगे तो ये इसको आपको क्या है, रन करने से पहले फाइल को सेव करने को बोलेगा. इट विल आस्क टू सेव द फाइल बिफोर इट रन. So you have to give a proper name of file, that is ABC, suppose I have given. Once it will save, then you can see that output is hello is printed here. So this is a script mode. You can also type A equals to 10, suppose B equals to 20 you have taken, then C equals to A plus B, then print C. Again go on run, then you will see the output 30 will display on your screen. So this is the way you can use Python from official website, that is python.org. I think now everyone has clear how to download. First you will download the Python from official website, that is python.org. official website, that is python.org. or this is first way, and second one is Jupyter. I have told you that is this is Jupyter Notebook. Once you will type Jupyter Notebook, this is a second way by which you can use Python. So now everyone has clear these two ways to use Python. Please give response. Yes, sir. Everyone has clear? Rohit, Babul, Akash, everyone has clear now? Yes, sir. Okay, so we will go to next. Okay, so next thing is that is we had covered in last lecture what is the mean of token. Anyone have any idea what is token? Please give response. What is the mean of token? No, sir. In yesterday class we had discussed what is token. Everyone has clear token topic now? Please give response. Please give response. Okay. So most of the students saying, some are saying yes, some are saying no. So I am again going to recap all the things
So please make sure that you have to clear all these things. What is the mean of tokens? Token is smallest individual unit in Python. जो हम यूज़ करते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट पाइथन में, उसको आप क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं. ओके, सो who have not attend the first lecture, I will send the link of yesterday video. First of all, go to that video and try to understand. If again not clear, then I will surely give all the answer of your questions. Okay, so okay, because most of the students have clear the things now. Okay, so what is the use of comments? What is the mean of comments? Everyone have clear comments? Why we use comments? Those who have attended the class, they can ask they can give the answer. Akash have not attended the class yesterday, so Akash first go on our yesterday lectures that I will send, so by which you can understand. And day 1 lecture also recap in next lectures also, because all things comes into next lectures also. So very good. Nagraj has give right answer for writing something what we did in coding. बिकॉज कमेंट्स हम यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं कमेंट यूज़ करते हैं जब हम बहुत बड़ा कोड कोई लिख रहे हैं, उसमें कोड में हमने क्या क्या किया है, व्हाट वी हैव डन इन दैट पर्टिकुलर कोड, वी डिफाइन इट बाय यूजिंग comments. So how we define the comments? Yesterday lecture I told how we define the comments. We can define comments in by hash symbol. This is hash symbol. Whatever you will write, it will not come interpreted by interpreter. So this is code. So this is comment, and this will not run by interpreter. So this is comment by which you can give the comment in Python. And I also told that if there is no actually multi-line comments in Python, we can just make multi-line comments by using 3 open bar and that particular close. This work as a multi-line comments. This is multi-line comments, but not actually multi-line comments. It treated as a multi-line comments, but its actual use I will tell in next lecture. So this is the way you can define the comments. Next, that indentation. What is the mean of indentation in Python? What is the mean of indentation in Python? Please give response. What is the mean of indentation in Python? Please give reply. What is the mean of? Okay, I am telling what is the mean of इंडेंटेशन. इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है पाइथन में? इंडेंटेशन का मतलब पाइथन में क्या होता है कि जो स्पेस आपका है बिगनिंग ऑफ लाइन जो स्पेस आप एलोकेट कर रहे हैं वो इंडेंटेशन कहलाता है. और क्या होता है कि आपको इंडेंटेशन पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है पाइथन पे, बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. I am going to explain with example. Suppose you have written one statement a equals to 10 and b equals to 20 in second line, and in third line suppose you have used if condition a less than b
This is the way you give the condition. And suppose I am writing print statement hello here, and try to run this script. It will ask to save the file, so first save the file. So you can see that this generate error. This is error generated expected an indented block. क्या है indented block? क्या है error आ रही है? Why? Because indentation is properly not here. Why? Because the first line, first three lines we can say in same block of indentation, because they are same type of things. From third line I am using if, so inside of if I have to give proper indentation of if, that is this print statement must be inside this if statement. If I don't take this print statement inside this if statement like this, it is generating error, that is इंडेंटेड ब्लॉक एरर आपकी आ रही है. यहाँ पे दिख रहा है आपको सिंटैक्स एरर एक आ रही है आपकी. सो आई हैव टू गिव प्रॉपर इंडेंटेशन, देन रन, then you can see that now output is correctly going on. Okay, so indentation is most important thing in Python, so be careful when you write different types of control statements. What are control statements? That is next topic that we will discuss in next video lectures in other classes also. So don't bother about this. You will understand what is indentation in next few lectures easily. You will understand because it is repeated again and again. These topics repeated again and again, so you will understand. So in today topic we will discuss one thing. Once I again take indentation, now I have covered. Comments now have clear. What is keyword? What is keyword? Please give a response. Okay, I'm giving one question to all of you. I'm asking, it is valid or invalid? Suppose I have written like int equals assignment then 10. It is valid or invalid? Please give reply. Please give reply. Very good. It is invalid. Why? Because int is a keyword. Keywords is reserved word. Okay, keyword is a reserved words. We can't use keyword as a variable name, so it is invalid. We use this type. This is variable name. Okay, now everyone has clear. So we will discuss today lecture, that is data type in detail. In today lecture, data type, what is data type, we will discuss now. So I'm going to discuss now. This is today topic, that is data types in Python. Data types in Python. So first of all, what is the meaning of data type? Data types, it is a type of token. It is a type of token we had discussed in previous lecture. So data types tells type of data
use in Python script. So in Python, type of data. So in Python, different type of data we use. First one is string oblique text. This is string oblique text. What it mean? Whatever we will write in single opening and closing opening, or double quote opening and closing double quote, it will treat as a string data type. For example, name equals to Ajay. Here name is type string because it is covered by single quote, or I can write like this also, name equals to double quote Ajay. This is first data type, that is string data type. Let's check in Python script. We will check this. We will do practical things. Name equals to, suppose I have written Ajay. Okay, now I want to check what is the type, data type of this. So we use special function, that is type function. It tells the data type of variable. So let's run this. Once we will run this, print type of name, and I will run this. So yeah, you can say this. So class str, that is string type. This is type string. Output is, this is type string. So either you use single quote or you can use double quote. It will show the type. Its type is str, that is string data type. Okay, this is, and now, and how can you print the value? Print, then the variable name. Print, then variable name. You will get the output Ajay. You can see the output is Ajay. So now you have clear. I am again showing you output. This is Ajay output and its type is string. Okay, so this is first data type, that is string data type. In string data type we have two type of things. First one is single line. एक्सक्यूज मी सर Yes, सर एक बार आप ये टाइप प्रिंट टाइप वाले एक बार आप फिर से समझा देंगे. okay, once I am repeating. देखिए, मैं पहले इसको समझ लीजिए. देखिए प्रिंट क्या है. प्रिंट, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रिंट? ओके प्रिंट इज अ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है. ये फंक्शन है. इट विल प्रिंट द वैल्यू और डिस्प्ले मैसेज. ठीक है. कैसे, देखो अब मैं इसको समझा रहा हूं. देखिए आप लोग सब देखिए. देखिए यहां पे आई एम राइटिंग प्रिंट. ओके, नाउ इट्स शोइंग द its syntax. Okay, either you can pass a message so that user can understand what you have to do in your program. ठीक है. सपोज मैं कहता हूं कि यूजर से प्लीज enter your name. So this message I am going to pass to user. So it will simply display this message.
You can see simply display the message, please enter your name. Okay, now I want to do one thing. Suppose I have taken a equals to 10. If I will write print double quote a, what will be the output? It will just simply display the string a. It's just display a, not the value of a, not the value of a. Okay, so I want to print the value, so I have to write just the name of variable. So I will type print a, not double quote. I have not display the string a, I have to display its value. So I just write print, then what value the variable contain. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सबको आ रहा है कि यहाँ पे वर्ड हम यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? which change its value. Vary, it comes from word vary. Vary, that is change. Suppose I have used one variable a, its value is 10, and in next line suppose I have written a equals to a plus 10, then its value is now 20. So variable change its value, variable changes its value. In detail I will discuss in later videos, because variable topic will come in next video lectures also, so don't bother about this. So now understand, now you understand what is the use of print statement. Print is basically used to display the message or display the value entered by the user. Clear all of you? Now clear? Yes, sir. Sir, please explain that you use print type brackets, that statement. Okay, uh, uh, the use of type, I already told. Type function, it tells the data type of variable. Okay, Okay. it what is the use of the, when we use function, every function has specific use. Now we are using two function. First one is type. It tells the data type of variable, because Python is very simple language. There is no way to declare the variable like in C language we declare the variable like int, float. In Python it is not the way you declare the variable like this. Suppose you will write just write a equals to 10, so it means it is integer. Okay. If I write a equal to 10.2, it means it is a float data type. No other way to declare the variable like in C languages. If you had know the C languages or other languages, you must declare the variable before it is used in your program. But Python is very simple language. No rule to declare the variable, just use, and according to its value it will change its type. So if I am taking 10, if I am taking 10 and print its type, I want to check what is the type of this a. Then run. Okay, sir. I am going to run. Then it will show the type, that is int. Because Python is object oriented, you can see the class, everything is in the form of class and objects. तो इसकी क्लास कौन सी है? int. इसका टाइप क्या है? int. ऑटोमेटिकली बता रहा है आपको. अगर आप यहाँ पे आप उसको 10.4 कर देते हैं और इसको रन करते हैं, when you will run this, it will show that type 10.4 किया आपने और इसको रन किया आपने. when you will run this, it will show its type is float. Float. Okay, and once you will give it like true, what will be the output? It will show its boolean type, that is true or false. Okay, according to its value it will change. Suppose I am taking Ajay, then want to check its data type.
So how I will check that its data type? It will show that String. data type is str, that is String. string data type. Okay, so Oh, now everyone has clear what is the use of type function. Type function yes, is yes. used to check the data type of a particular things. ओके, पर्टिकुलर वेरिएबल, वेरिएबल और वेरिएबल क्या होता है आप लोगों को सबको क्लियर हो चुका होगा. मैं आपको प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ देखिए, प्रैक्टिकल करना है, थ्योरी तो अपनी जगह पे, लेकिन प्रैक्टिकल यू हैव टू लर्न प्रैक्टिकल वे. सपोज आई हैव रिटन a इक्वल्स टू 10. अब मैं इसको कह रहा हूँ कि ये क्या है, वेरिएबल है. आई एम सेइंग दिस इज वेरिएबल. हाउ? बिकॉज इफ आई वन चेंज a इक्वल्स टू a प्लस 10, तो इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए. तो इफ आई विल प्रिंट, अब मुझे प्रिंट करना है, कोई वैल्यू को प्रिंट करना है. यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि वैल्यू प्रिंट करनी है कि मैसेज प्रिंट करना है. मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उस वेरिएबल का नेम देना पड़ेगा मुझे. आई हैव टू गिव द वेरिएबल नेम. देन आई विल रन दिस, देन इट विल शो 20. why 20? because this is a variable change its value. ओके, सपोज आई हैव रिटन अगेन, यहाँ पे फिर से मैं a इक्वल्स टू a माइनस 10 कर देता हूँ, and again print the value of a. Then what will be the output? 0. 10. Why? Question Because 10. because it is changing its value. Variable means which change its value. डोंट बॉदर अबाउट दिस वेरिएबल टॉपिक. हमें आगे वीडियो लेक्चर में हमें करना है डिस्कस. ये पूरा वेरिएबल कैसे होते हैं, इनको कैसे करा जाता है, ये सारा का सारा हमने आगे डिस्कस करना है. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है सबको कि जो हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रिंग में, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको. देखिए, सिंगल हमने कहा स्ट्रिंग, पहला जो डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग पढ़ा है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो स्ट्रिंग भी दो टाइप की है इसमें. एक है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, और दूसरा है सेकंड वन इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग. ओके, सिंगल लाइन स्ट्रिंग को हम कैसे करेंगे रिप्रेजेंट? सिंगल क्वोट ओपन और क्लोज, और डबल क्वोट ओपन और डबल क्वोट क्लोज से. और मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे देंगे? 3 टाइम्स ओपन एंड 3 टाइम क्लोज. whatever we will write inside this, it work as a multi-line string. I am going to tell you in detail in practical format. You will understand here. Suppose name, variable name is a any identifier. You can take name, age, address, whatever you want. Name equals to Ajay and print name. Anyone can tell if I will write this, what it will display? Anyone can tell this output of this? What will it display? Name. Just display name, not the value of name. It just display the name, not its value. So how can I display its value? कैसे आएगी डिस्प्ले, वैल्यू कैसे आएगी डिस्प्ले? ओके, जब हम By omitting the codes. केवल उसका नाम लिखेंगे. we just write its name, then it will display its value. Now you can see the value is Ajay. Okay, suppose I want to write like Ajay go to the market. Suppose I want to display in multi-line string. Okay, so how it can be possible? I told you in yesterday lecture, that multi-line comment, no multi-line comment type in Python. हम जैसे multi-line comment की तरह यूज कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो था क्या? मल्टी लाइन स्ट्रिंग था. उसको हम कमेंट की तरह यूज कर रहे थे, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट नहीं होता. हम इसको समझने के लिए करते हैं. मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे होती है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. सपोज आई वांट टू राइट लाइक दिस. I have written I want to read. Now I am going to second line, English
Again I am going to next line, book, and after that I have written again I will go to the market. Suppose this I have written, so I want to display all these things. Now you can see this is multi-line string. In first line you have written I want to read, second line English, then book, and then I will go to the market. Now I am going to run this. Once you will run this, you can see that this is the output is displayed in a multi-line. This is called multi-line string. Okay, now everyone has clear two way of string, that is single line string or multi-line string. Okay, if you want to use multi-line string, you use 3 times open and 3 times close. Whatever you will write inside this, it will treat as a multi-line string, or you can use this as a comment, multi-line comment also, but not actually type multi-line comment. It is a multi-line string. Everyone is clear now? First data type. Yes, sir. Okay, so single line line string, and second one is multi-line string. Now everyone has clear. Now the second type is first type. Now everyone has clear. Now the second type is numeric type. Numeric type. In numeric type we have integer, then float, and third one is complex. Okay, integer, float, and complex. What is the mean of integer? That is whole number. Suppose I write a equals to 10, then its type is integer. And suppose I write 10.4, its type is float. And what is complex? Any idea what is complex number? What is complex number? Which It has contains imaginary value. हाँ yes, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिखेंगे? a इक्वल टू 3 प्लस 4j. Here 3 is a real part and 4 is imaginary part. So this type is this comes in numeric type. I am going to show it in practical way so that you will understand. A equals to 10, B equals to 10.4, and C equals to 3 plus 4j. So I want to check type of A, type of B, and type of C. How it will display? Please write in message box. Print type of A, then its value. How its value display? Print A, then print type of B and its value. Print B, then print type of C, then print its value C. So when I am running this, so you can see that first type is integer. You can see first type is integer and its value is 10. Second type is float and its value is 10.4, and third type is you can see third type is complex and its value is 3 plus 4j. Okay, so three type of data, that is integer type, whole number, floating type which has decimal part also, and complex number which has real and imaginary. Everyone has clear now?
Yes, sir. Yes, this sir. is this is numeric type. And now third type, that is collection type. collection type collection type क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे? बिकॉज इट वर्क्स ऑन ग्रुप ऑफ आइटम्स और वैल्यूज. ओके, इट वर्क्स ऑन ग्रुप ऑफ आइटम्स और वैल्यूज. क्लियर? तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें कौन कौन से डेटा टाइप आएंगे, वन बाय वन आई एम टेलिंग. फर्स्ट आएगा इसमें लिस्ट टाइप. सेकंड आएगा इसमें आपका टपल टाइप. सॉरी, सेकंड वन इज टपल टाइप. Tuple type. And third one is dictionary type. I will tell each and every one in detail. Dictionary type. Fourth one is set type. So these are collection type of things. Okay, so first of all I will tell you what is list type. First is list. What is the meaning of list? It is ordered sequence of items. एग्जाम्पल कैसे बनाते हैं इसको? आपने लिखा सपोज मार्क्स इक्वल्स टू, आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे और उसमें वैल्यूज लिखनी है 60, 70, 80, 90, 99, then close the square bracket. It will create list. And second question, how you will create empty list? How you will create empty list? So how you will create empty list, I am going to tell you. So you use, suppose you have written marks and blank square bracket, you have write nothing, it will show empty list. Or you can use list function also, marks equal to list, it will also generate empty list. Let's see in practical example in Python. Ideally, suppose I have written marks equals to, then square bracket. So first of all I will create empty list, then print type of marks and print its value also, print marks. Then again I am going to create empty list by second way, marks 1 equals to list, then again type print type of marks and then print its value, print
marks, and now third I will create a full list. Marks 3 equals to 80, 90, 70, 66, how much I want to take. Now again same thing I have to cover, Control C, then Control V, copy and paste I have done. So this is marks 3 and 3. So anyone can tell me how many variable I have declared in this program? Please give reply. How many variable I have declared here? Please give in text message. Very good, 3. So I am going to run this. It is going to error. Why generated error? Because it is interpreter language. In first line I have written marks, syntax is okay. In second line I have a print. In third line I have written PRIN. Print is nothing, print, that is print. So if you not write the proper way, it will generate syntax error. I will cover errors topic next lecture. So I am going to run this again. So now you can see output. Class is type is list. This is first is empty list, second one also empty list, and third one is proper list. Here the values are 80, 90, 70 and 66. Okay, now everyone has clear how to create empty list or how to create a proper list. Everyone has clear? List is a ordered sequence of items or value. Here ordered sequence, we have write ordered sequence. What is the meaning of ordered sequence? Ordered sequence means this first item has index number is this. Excuse me, sir. Yes. Sir, in last slide, please open, sir, last slide. This index is 0, its index 1, 2, it's 3, it's 4. This is ordered pair, index from 0. In which slide? सर लास्ट इन नो सर मूव फॉरवर्ड जिसमें आपने प्रिंट करवाया था प्रिंट मार्क्स लिस्ट वाला सर उसमें एक चीज पूछ यस सर इन फोर्थ लाइन यू यूज print fifth line print type marks so here you have to use print marks 1 print type marks 1 1 okay one use or mark and print the marks 1 okay one yes otherwise it will print previous variable name variable type or its value okay it's common thing you can do it itself okay it is now everyone clear. First one is it will create the empty list and its type of lists and its value is empty list. Again is if you want to create empty list it will also empty list. This is also empty list and this is also empty list. Sir, for creating list we have compulsory to use a square bracket. Yes, very good question. Square bracket. Now the second topic that I am going to cover, that is tuple. Okay, now let's have clear to everyone. Second one is tuple. Tuple is also ordered sequence. Ordered sequence of items, but it is immutable. और लिस्ट क्या होती है आपकी म्यूटेबल होती है. क्या होती है यही दोनों में फ़र्क होता है. लिस्ट क्या होती है म्यूटेबल होती है. म्यूटेबल का मतलब क्या होता है चेंज कर सकते हैं लिस्ट में हम.
इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? विच कांट बी चेंज। ओके, क्लियर? तो ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स बट इट इज इम्यूटेबल होती है। अब इसको सिंटेक्स इसको कैसे क्रिएट करेंगे? जहाँ जहाँ पे आपने मार्क्स लिखा था, मार्क्स में आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज था, यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस करेंगे। इट विल क्रिएट एम्प्टी tuple and it will also marks tuple, it will also generate empty tuple, and to create full tuples you will create marks, then in parenthesis 80, 90, 70, 60, 80, it will create tuple. I am going to explain with example in Python ideally. Just use. So now you understand. Tuple, and this will also parenthesis and close parenthesis. Clear? Now I am going to again run this. Now you can see output type is tuple. Okay, empty, empty, and this. टपल को आप कैसे बनाएंगे? टपल को बनाने के लिए कौन से ब्रैकेट का यूज़ करना है आपको समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? टपल बनाने के लिए आपको कौन से ब्रैकेट का यूज़ करना है? टपल के लिए आपको दिस इज यूज फॉर टपल, और देन स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज फॉर लिस्ट। और अभी हमने डिस्कस किया कि ये इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब चेंज नहीं कर सकते इसमें हम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल कर दिखा रहा हूँ आपको, अभी आप देखिए यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे इसको बनाया है पहले लिस्ट बनाया है, आई हैव मेड इट लिस्ट, okay, I am going to change its value. Suppose I have written marks 3 of, I have already told the index of this first one is 0, then 1, 2, 3. So I want to change second list item value. So its index is 0 and 1. Okay, so 1 I have given, and I have given its value is 99. Suppose 99 I have given. Now I am going to print marks 3. इन पुराने वालों को हटा लेते हैं, ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो चुका है यहाँ पे। सो इसको हम चेक करते हैं कि ये म्यूटेबल है या नहीं है। क्लियर? अब मैंने क्या करा, इसको रन किया। व्हेन आई विल रन दिस, what output, again I am showing run. Now you can see that before changing the value, its second index value is 90, now its value is 99. So list is mutable, whereas म्यूटेबल का मतलब क्या है, इसमें वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? उसका इंडेक्स नंबर देंगे वहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है तो पहले का इंडेक्स, सपोज मेरे को क्या है 0 1 2 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी है। देन 3 मैंने यहाँ पे दे दिया, देन मैंने इसको मैं रन करता हूँ। नाउ यू कैन सी द थर्ड वैल्यू, लास्ट वैल्यू इज चेंज नाउ। सो दिस सो दैट लिस्ट इज म्यूटेबल। अभी इसी को चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको क्या बना देता हूँ, टपल बना देता हूँ।
इसको मैं टपल बना देता हूँ। तो रन किया मैंने इसको, तो देखिए क्या एरर आ रही है, आप देखेंगे यहाँ पे टाइप एरर आ चुकी है। टाइप पर टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इट मीन्स टपल इज इम्यूटेबल। टपल क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। टपल को हम टपल में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पे कलेक्ट ग्रुप, आप कहाँ पे टपल को यूज़ करेंगे, कहाँ पे, समझ में आ चुका है सबको? सबको टपल और लिस्ट समझ में आ चुका है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन हैज़ क्लियर? देखिए टपल को वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रिज करके रखनी है, वैल्यू को चेंज ना हो। ऐसे ही हम ग्रुप ऑफ वैल्यूज, जैसे जैसे आपने क्या है, आपने सपोज 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स बनाए और किसी ने सेधमारी कर दी, उसमें किसी ने उसको हैक कर लिया, और हैक करने के बाद उसमें चेंज करने की कोशिश करेगा वो मार्क्स को, तो अगर वो आपने टपल बनाया है तो वो उसमें चेंज नहीं कर पाएगा। वाई? बिकॉज टपल का नेचर क्या है, उसमें वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती हैं। यू अंडरस्टैंड नाउ? If someone want to hack this data and want to change, it will not change because it is type tuple। और जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे आपको चीज़ों में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी आगे, जो आपने ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ लिए हैं, आइटम्स लिए हैं, उनमें चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ यू वांट दैट दोज कलेक्शन ऑफ आइटम्स you have to change further, then you will use list। okay, now you have, everyone has clear two data types, that is list and tuple? Everyone has clear? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? No, sir. Okay, so No, sir. so next one is, that is type dictionary। देखिए डिक्शनरी डेटा टाइप में हम DICT डिक्ट कीवर्ड करके आएगा आपका, इसका टाइप जब चेक करेंगे डिक्ट, दैट इज डिक्शनरी को शो करता है। ठीक है, ये क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है। क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है। और सीक्वेंस ऑफ की कोलन वैल्यू पेयर ऑफ आइटम्स। इसको आप कैसे समझेंगे? अनऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ की कोलन वैल्यू पेयर ऑफ आइटम्स। इसको एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ, आपको तब समझ में आया एग्जांपल। सपोज मैंने, जैसे डिक्शनरी होती है, आपको पता है डिक्शनरी, आप क्या देखते हैं डिक्शनरी में, अगर आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो क्या है, इंडेक्स, उसके की, उसकी की से आप ऐसा करते हैं, उस की पे जाएंगे, उस की पे पड़ी हुई वैल्यू को आप चेक कर लेंगे। इफ़ यू वांट टू एक्सेस पर्टिकुलर थिंग इन डिक्शनरी, यू यूज़ की। सो हाउ यू विल डिक्लेयर डिक्शनरी? you just type suppose marks I have to taken, and I will use curly braces for dictionary. This will create empty dictionary, and if I will use marks, I will use DIC dict, it will also create empty dictionary। okay, so प्रॉपर डिक्शनरी कैसे बनेगी अभी भी दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। वेरी सिंपल, मार्क्स लिखा आपने, करली ब्रेसेस लगाया, सबसे पहले आप की क्या लिखते हैं, की कोलन वैल्यू, फिर की कोलन वैल्यू, ऐसे ही सीक्वेंस बनाएंगे आप, की कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू, इसी के और क्लोजिंग करा देंगे। तो कैसे बनेगा? जैसे सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे, की लिया मैंने अजय और उसका मार्क्स लिया सपोज 99, फिर दूसरी की ली मैंने अमित और उसकी मार्क्स लिख दिए 77, फिर थर्ड लिया मैंने अजय और उसके मार्क्स लिख दिए 88, फिर लिखा मैंने राम और इसके मार्क्स लिख दिए 99 और इसको क्लोज कर दिया। तो इट विल क्रिएट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होगा, आपका पहला टर्म होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, की को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड टर्म क्या करेगा, वैल्यू को। तो की क्या होगी,
की क्या होगी, वैल्यू टाइप होगी, और सॉरी की क्या होगी आपकी, बिल्ट इन टाइप। बिल्ट इन टाइप डेटा मतलब इंटीजर टाइप ले रखा है आपने, या फ्लोट टाइप ले रखा है, या करेक्टर टाइप ले रखा है, सॉरी स्ट्रिंग टाइप लिया है, जो हमने अभी पहले यूज़ करे थे वो चीज़ें। और जो आपका सेकंड टर्म क्या है, वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू जो होगी, जो भी ऑब्जेक्ट टाइप आप जो भी कुछ लेना चाहें वो ऑब्जेक्ट टाइप आप इसका चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसे इसको समझना है, देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ इसको, बहुत सिंपल तरीका है। आपने लिखा मार्क्स और आपने केवल ये कर दिया और इसके बाद इसको प्रिंट करा, टाइप मार्क्स किया और प्रिंट किया। if I will print this marks, after that I will close this class. So once I will run this, you can see that the type is dict, that is dictionary, and this is empty dictionary. Clear, everyone clear? Or I can create using dict dict and run, it will also create empty dictionary. Clear, everyone has clear? So Yes. if I want to create proper dictionaries, then suppose I have given, please unmute Oh, sorry. Ajay, and I have given its marks is 99 comma, second key is Ram and its marks is suppose 88, then third key is Rohit and its marks is 77, Vijay and its marks is 90. I can make the list by these pair, key colon value, key colon value. Key I can I have taken key here as a string type. You can take it integer type also, you can take as a float type also. So okay, so you can take key then its value, okay, and then close it. And when you will run it, जब इसको रन करेंगे, I am showing again its output to clear output to all of you. Now you can see that class is dict and its type is Ajay 99, Ram 88, Rohit 77, Vijay 90. सपोज मुझे क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स को क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है. तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, बिकॉज इट इज नॉट ऑर्डर्ड, इट इज अ key based. So if I write like this, Rohit, then it will display the marks of Rohit. So how I can access the marks of Rohit? By its key value. Marks is 77. So now you understand, first one term is key and second one is its value. So this is the way why you define the dictionary. Don't bother about this, I will cover this topic dictionary type tomorrow also. So this is for today. Now you have clear the three basic types and some collection data type also I have covered. So we will meet tomorrow. If you have any doubts you can ask, till that you have any doubt you can ask to me. किसी को डाउट है, कुछ पूछना है इसमें अभी तक में? No, sir. सबको क्लियर हो गया है यहाँ तक? Sir, हाँ, किसी को can we पूछना? change values like list? Yes, we can change the value in dictionary also. Suppose like it is a mutable like this, marks
ऑफ सपोज किसके मार्क्स चेंज करने हैं आपको बताइए, कोई भी बताइए किसके मार्क्स चेंज करने हैं। लेट्स टेक राम्स। राम का मार्क्स चेक करना, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे, देखिए राम लिखेंगे, उसका की लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस नहीं है, तो आपको की का वैल्यू लिखना पड़ेगा। यहाँ पे राम लिखा आपने, उसको क्लोज किया और इसके मार्क्स आपने सपोज दे दिए 88 हैं, आपने 100 दे दिए और देन प्रिंट करा आपने, अगेन प्रिंट करा इसको मार्क्स को, सॉरी मार्क्स को प्रिंट किया आपने। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? देखिए क्या आ गया, आप यहाँ पे राम की वैल्यू कितना आ चुका है, राम का मार्क्स कितना आ चुका यस है, सर, यस 100 आ गया है। क्लियर? तो यस। बस चेंज उसमें देखो लिस्ट में तो उसके इंडेक्स नंबर से चेंज कर रहे थे हम, बिकॉज डिक्शनरी इज अ सीक्वेंस ऑफ की कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू पेयर। सो हमको कोई भी चीज़ को एक्सेस करना है तो उसके की से हम एक्सेस करेंगे। आपको वैसे भी पता है डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी में किसी भी चीज़ को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, इफ़ यू वांट एनीथिंग सर्च इन डिक्शनरी तो यू मस्ट नो द की टर्म, by the know the key term you can access that particular value in dictionary. Clear? So we will meet tomorrow. Hope you will enjoy it. Till that, take care. Bye bye. Okay, bye. Bye.